Morning to all of you. We can start the live discussion. So uh, just wait for 5 minutes max to max, and then we can have the live discussion. Hope you all are well. Very good morning. I hope my voice and everything is clear. एक बार confirm कीजिए. So we can start the discussion. If you have any question, please let me know. Thank you, Ashish ji. Good morning. Very good morning. Uh, 10th of July and 11th of July, lot of notification circular has been issued, and also the lot of notification has already been issued. So I can say circular come notification, there are a lot of changes and clarification. Make sure that you all are aware about all such changes. Anything which we can discuss, please let me know. We are happy to discuss. So, and also one more thing, that there are certain changes with respect to GSTR 9 annual return. So like e-commerce operator ka detail has been added. Separately, we need to report non-GST supply, no supply. Now we all have one very good problem, one problem which has been resolved very efficiently. That one problem, the table 8A is taking the details from the GSTR 2A. If you remember, the last year, the details are coming from the GSTR 2A. Remember? So now we can say that all such details will, because as per the law, we are very clear that it should come from the GSTR 2B. Correct? But we are having the problem that why the table 80 of the GSTR 9 is taking the detail from the GSTR 2A. Now that problem has been resolved, because it is taking, now it will take the detail from the GSTR 2B, not from GSTR 2A. So that is very good thing, I can say, which has been clarified, or which has been notified, I can say. And again, the relaxation of the GSTR 9 and 9C, most of the relaxation are same, which is there in the past years. So we are not required to have too much worry about the changes, because relaxation is almost same. Okay. And one more thing, that we know that if we have the reclaim ITC, now the reclaim ITC, because of two reasons, Rule 37 and Rule 37A. What is the Rule 37? Can you quickly tell me what is the Rule 37 and what is the Rule 37A? Or in other word, you can tell me what is the reclaimable ITC, which we have reversed earlier in the temporary category, and we are allowed to reclaim at any point of time in future. What is that?
नमस्कार वेदी सेवरन जी, कैसे हैं? So can you quickly tell me what is the rule 37 and what is the rule 37A? Or in other word, you can tell me what is the ITC which we have reversed temporary and we can reclaim in future. Absolutely correct, Santosh Patil ji. Non-payment within 180 days. That is the rule 37. So which has been clarified that if such ITC which is reclaimed in the future, let's say in the financial year 23-24, we have reversed because of 180 days. Okay. And in the 24-25, we have made the payment to the supplier and we are reclaiming. Will that ITC which is reclaimed in the 24-25, let's say up to November, will be reported in the GSTR 9 of financial year 23-24 or not? That has been clarified. Answer is no. It will not be reported because reclaiming, you are reclaiming in the 24-25. It means this become the ITC of 24-25. Inward supply HSN by GSTR 9, any update that will be relaxed. So same relaxation is there, very several G, same relaxation. So you are not required to update. Satyanarayan ji, very good morning, sir. Yesterday webinar regarding reconciliation not mandatory for ITC mismatch. Can you please some more light on the same, Satyanarayan ji, that you have to see. So sir was supposed to say, to my limited understanding, that see in the books of accounts, if you refer the section 35, read with rule 54, 56. They are talking about the details of the ITC, etc., which you are claiming. ITC register you need to maintain, but none of the places it is written that you need to maintain the reconciliations. So reconciliation is not required was as per the yesterday webinar sir was supposed to say, which is as per my understanding. And also sir was saying that if you not claim 2A, if you not claim the ITC from the 2A prior to the 9th of October 2019, that is prior to the insertion of the rule 36.4, then also that is not a problem. Any other point, any other query which you like to discuss with me? And today webinar we will have the for half an hour only, that normally we are doing work for half an hour only. So if you have any question, please let me know. Ashish ji, loss of sale of fixed asset booked in other income. Asset scrapped out without any commercial value. Whether GST is applicable on the loss of sale of fixed asset, please guide. Tell me one thing. Have you sale for any consideration? मतलब क्या आपने कुछ कंसिडरेशन लिया है क्या? Have you taken any consideration? अगर आशीष जी, if you have taken some consideration, then I can say GST would be payable on that sale proceed. If you are saying you're completely scrapped out without any value, in that case, there is no GST because it is without consideration. Third point, you need to check whether you have taken the ITC or not. Whether you have taken the ITC or not. If you have not taken the ITC, then section 18, subsection 6, as you know, will not come into the picture. Sir, Raki is exempted as per the exemption. That why, then why are personal Raki is taxable as per the, sir, मैं देखो, ख्याति साजी, I am not able to tell about the GST tariff. देखो टैरिफ याद रखना भी पॉसिबल नहीं है और उसका लॉजिक भी वो टैरिफ देख के मालूम चलेगा. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई कैन ट्राई टू शेयर माई व्यू, बट इफ इट इज रिलेटेड टू टैरिफ, देन इट इज ए प्रॉब्लम. Then it is not possible for me to recall all the tariff item.
So I hope it is clear. Ashish ji, if you have any counter argument, kindly let me. We were talking about the corporate guarantee. We were talking about various notification which has been issued, clarification which has been given. So if you see the now the corporate guarantee, slight relaxation is there, whatever 1% or actual consideration which is whichever is higher, that we know rule 28 sub rule 2. But at the same time, they have made rectification by saying that if you are eligible for full ITC, if you are eligible for full ITC, whatever the value you have declared, it will be deemed to be the open market value. Earlier, they were not accepting this. Earlier, they were not accepting this, but now they have accepted. And as per them, if you are eligible for full ITC, any value declared on the invoice will be deemed to be the open market value. One more doubt which normally come, that if you are having the total consideration less than 20 lakhs, if you are having the total consideration less than 20 lakhs, then not required to take registration. In that case, there would be no GST. My confusion is regarding the taxability. Is it taxable if chapter 71 material not used? ख्याति जी, then मैं वही कह रहा हूँ ख्याति जी, the problem is that I need to go to the tariff to resolve your query. So I think you were having the discussion. You were having the discussion with Srinivasan sir. So अभी भी एक बार वापस उसमें आप क्वेरी पूछिए, मतलब विल ट्राई टू यूज फ्रॉम अनदर एंगल, विल ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम अनदर एंगल, एक बार रीड कर लेंगे, एक बार वापस आप ग्रुप में पूछिएगा सर, आई रिक्वेस्ट. आशु चोपड़ा जी, जीएसटी ऑडिट कवर सेक्शन 73 74 जीएसटी डिपॉजिट टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी की रिबेट होगी क्या? देखो आशु चोपड़ा जी, अगर वो सेक्शन 73 का केस बनाते हैं तो आपको रिबेट मिल जाएगी, मतलब आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, और नहीं, आपको सिर्फ टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी माफ हो जाएगी. बट 74 का रिलैक्सेशन नहीं दिया है. और ध्यान रखना, जो ये एमनेस्टी स्कीम आई है स्टार्टिंग 3 साल के लिए, ये 17 18 18 19 और 19 20. 74 में कोई रिलैक्सेशन नहीं है. मैं रघु सर का क्वेश्चन रीड कर रहा हूं. विद रेफरेंस टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग वारंटी, वी हैव सप्लाइड 16 pipes which are used as a part of the ships. 13 pipes got consumed at the location of the customer in testing. Okay. And the customer made the complaint regarding the quality and asked for the replacement of the 16 pipe, and leftover 3 pipe are returned. Complaint made within warranty period, but replacement is to be made after warranty period. Yes. देखो, if you are Raghu sir, if you are sure, matlab, if your terms and condition are saying that yes, you need to replace without any additional charges, then 100% you can send on the delivery challan. 100% you can send on the delivery challan, no problem. It's not because your terms and condition you need to satisfy. That if it is satisfied that yes, you need to provide without any consideration, it is covered in the warranty period, then no problem. You can give on the basis of delivery challan, you can send on the basis of the delivery challan, and no GST would be payable and no reversal of the ITC would require. If the ITC availed, we have to if ITC availed, then we have to reverse. See, Ashish ji, we all know that on the 18(6) there are two rule applicable. एक rule 40 sub rule 2, एक rule 44 sub rule 6.
In that case, I can say you compare both, whichever is higher, you need to pay. Second option, if you don't like to go into that, then you can simply say 5% per quarter. As per my understanding, the 40 language of the 40 sub rule 2 would be applicable for section 18.6. Section 18.6. And therefore, and therefore, the 5% reversal would be okay. But if you're more conservative, if you like to go very, very deeply part, then you can compare with both, and whichever is higher, you need to pay the same. Very good morning, Kuljiji. And Krishna sir, yes, yes, yes. So we are having मतलब कि GSTR 9 का classes, GSTR 9 and 9C for the financial year 20 through 24 with all the amendment. And I will take one case study on the GSTR 9 to have the better clarity. We have launched this course in the next month. You can visit our website www.edukating.com, and it will be made available. Probably it will be on after 11th of August, because this month would be very, very occupied, very, very busy for all of us. So we have kept the training on GSTR 9 and 9 in the next month. Very good morning, Praveen Solanki ji. So as you know that we are having the membership of GST, income tax, PF, ESIC. In the GST, we are having the three category of the membership: gold, platinum, and silver. Silver, we are resolving the query. Gold, we are resolving the query plus 5 notices we are reviewing. Notice can be notice, or it can be audit objections. It can be any appeal also. We are reviewing and providing the valuable input. And then last is platinum. So in addition to whatever covered in the gold and silver, we will also provide the 65 hours GST certificate course, which I am providing, that will be added in your login. For first year and second year, when you are renewing, you can attend one live batch. After GST audit, notice can be issued in audit period, can be issued in the audit period by the department. Not clear, question clear नहीं है. See, देखो सेक्शन 65 और सेक्शन 66 जो भी स्पेशल ऑडिट है, डिपार्टमेंटल ऑडिट होती है, अगर उनको लगता है टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, erroneously रिफंडेड, देन दे कैन issue the notice in the 73 or 74, whatever the case may be. The charges are 5,000 for silver, 10,000 for gold, and 15,000 for platinum. If you are interested, you can join our that particular any program which you like to join. But yes, I can definitely say that you will have the definitely value addition in the membership plan. Any question? Very good morning, Priyanka ji. Ashish ji, okay, fine. Mahinder Prajapati ji, very good morning. Very good morning. So आशु चोपड़ा जी, एक बार आप अपना क्वेश्चन कंफर्म करेंगे वापस. आप क्या कहना चाहते हैं कि आफ्टर जीएसटी ऑडिट एनी नोटिस कैन बी इशूड इन द ऑडिट पीरियड बाय द डिपार्टमेंट? सी, देखो 73 या 74 के नोटिस की अगर मैं बात करूं, इट हैज सम टाइम लिमिट. तो पहला पॉइंट है कि वो विद इन टाइम लिमिट होना चाहिए. महेंद्र प्रजापति जी का क्वेश्चन है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू मुंबई कस्टमर, गुड्स रीच टू द कस्टमर प्लेस, नाउ डिनाइड टू रिसीव द गुड्स, नॉट रेडी टू प्रोवाइड एनी सपोर्ट फॉर द गुड्स रिटर्न. तो महेंद्र प्रजापति जी, जब भी कभी
immediately we find new customer and the sold goods at Mumbai. E-way bill should be generated. What about the goods return? देखो, ई-वे बिल आप जनरेट कीजिए कैसे? आपके पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ता है कि आप एक डिलीवरी चालान बनाओ। यू प्रिपेयर वन डिलीवरी चालान फॉर पिकिंग द गुड्स फ्रॉम कस्टमर लोकेशन ए एंड टू द कस्टमर लोकेशन बी। एक दो तीन वे हो सकता है, इसके दो तीन वे हो सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन सजेस्ट करता हूं। उस डिलीवरी चालान पर आपका एक ई-वे बिल बनेगा। सेकंड, यू विल प्रिपेयर द क्रेडिट नोट, बट उसके रिगार्डिंग कोई भी ई-वे बिल नहीं बनेगा। तीसरा, आप टैक्स इनवॉइस बनाओगे नए कस्टमर के नाम पे, उसके रिगार्ड में कोई ई-वे बिल नहीं बनेगा। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। पहला, आप टैक्स इनवॉइस इशू कीजिए जो नया कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है, और जो कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है उसका क्रेडिट नोट इशू कीजिए। तो आपकी सेल्स रिटर्न एंड सेल्स वो आपकी प्रॉपर हो गई। अब आप एक ई-वे बिल बनाइए जो आपने नया डॉक्यूमेंट इशू किया उसके बेस पर, नया टैक्स इनवॉइस जो नए कस्टमर को आपने इशू किया उसके बेस पर, बट आप इसमें बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम मॉडल यूज कीजिए। जब आप ई-वे बिल में जाते हैं, लॉग इन करते हैं, तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, 4 तरह की कैटेगरीज आती है। तो थर्ड कैटेगरी बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है। उसमें क्या करोगे? मान लो आप नए कस्टमर का लोकेशन है महाराष्ट्र, तो आप टू करोगे बी और लोकेशन लिखोगे महाराष्ट्र। पिकिंग फ्रॉम में ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफॉल्ट आपका एड्रेस आएगा, लेकिन आप जब बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम करोगे आप उसको एडिट करोगे और आप अपना लोकेशन, आपने अपना लोकेशन क्या बताया, लेट से दिल्ली, तो आप दिल्ली लिखोगे, दिल्ली आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसको एडिट करके वापस क्या लिखोगे, कस्टमर ए का लोकेशन। देयर आर द टू वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? प्रवीण सोलंकी जी, SCN received e-way bill versus R1. It is different for issued credit note. Difference due to the credit no tax liability is reduced against e-way bill liability. My decision is okay or not okay? प्रवीण सोलंकी जी, आपका क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। SCN received e-way bill versus R1. It is different for issued credit note. Difference due to credit no tax liability is reduced against e-way bill liability. My decision नहीं समझ में आया। प्रवीण जी, आपको वापस समझाना पड़ेगा मुझे। कृष्णा गुप्ता जी का क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इफ आई इश्यू द नोटिस इन फॉरेन इफ आई इश्यू द इनवॉइस इन द फॉरेन करेंसी फॉर सर्विस एक्सपोर्ट, देन व्हाइल मेकिंग द एंट्री इन द बुक शैल आई अगेन इश्यू इनवॉइस इन INR और आई कन्वर्ट एंड मेक बुक एंट्री? यू कैन मेक एंड कन्वर्ट बुक एंट्री ना। सी, जब आप फॉरेन करेंसी में, देखो आप दो काम कर सकते हो। एक तो फॉरेन करेंसी में इनवॉइस बनाया, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब दो सेपरेट आपको इनवॉइस नहीं बनाना। यू कैन सिंपली कन्वर्ट वट एवर द मतलब आप जो भी आप रेट यूज करोगे, यू कैन कन्वर्ट। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक टू सेपरेट ई इनवॉइस। नो, आपका अगर एक्सपोर्ट एक है तो आप एक ही इनवॉइस बनाओगे। पर देखो हमेशा क्या होता है, जो ई इनवॉइसिंग आप बनाते हो ना, तो ई इनवॉइसिंग आप हमेशा INR में बनाओ ना। जो इनवॉइस आप एक्सपोर्टर जो फॉरेन पार्टी को दे रहे हो, वो एक आप कॉमर्शियल इनवॉइस बनाओ। नॉर्मल आप अपनी एक्सेल शीट में बना सकते हो, गिविंग द रेफरेंस ऑफ द सेम, दैट ओनली फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर आउटसाइडर क्लाइंट। बट जो रिपोर्टिंग आपको GSTR1 में करनी है, जो रिपोर्टिंग आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी है, वो आप ई इनवॉइस जो कि INR में बनाया है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। क्लियर? प्रवीण सोलंकी जी, सम ई-वे बिल कैंसिल और डिस्कार्ड, सो डिफरेंट आर अराइज। सम ई-वे बिल कैंसिल और डिस्कार्ड। तो अगर आपने ई-वे बिल कैंसिल किया है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट भी तो आपने कैंसिल किया होगा ना। अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ प्रवीण जी, आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट एक बार आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा आपकी जो भी क्वेरीज है। आशु चोपड़ा जी का क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। जीएसटी डिपार्टमेंट
आवर फॉर्म ऑडिट कंडक्टेड 17 से 2023, डिमांड क्रिएटेड, वी हैव पेड द सेट डिमांड, एनी फर्दर नोटिस इशूड इन दिस पीरियड इन फ्यूचर और क्रिएट एनी डिमांड? आंसर इज यस, पॉसिबल है, पॉसिबल। देखो कृष्णा गुप्ता जी, अगर आप बोलते हो कि आपके लिए इजी है इनवॉइसिंग फॉरेन करेंसी में बनाना, बट मैं कह रहा हूं कि आप जो इनवॉइसिंग बनाओगे वो आईएनआर में बनाओगे, क्योंकि इनवॉइसिंग से डेटा पिक होकर आता है आपका जीएसटीआर 1 में। तो आई वुड सजेस्ट कि यूज e-invoicing only for the INR reporting, not for the commercial reporting. Otherwise, double reporting हो जाएगी, which will create the difference between R1 versus e-invoicing. But for us, sir, input allowed in case of the electricity pools? नहीं, अगर बस प्रॉब्लम वही है 17.5 C और D का प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मूवेबल नहीं रहेगा, मूवेबल नहीं रहेगा, इसलिए डिपार्टमेंट आपको बोल सकता है कि आईटीसी डिसअलाउ होगी, बट यू कैन से यू कैन इजीली डिसमेंटल एंड मूव एनीवेयर। देखो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लाइट मुझे चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी के लिए मान लो मैं कई चीजें यूज करता हूं, तो आईटीसी तो अलाउड है। ओनली प्रॉब्लम दैट दे कैन से दैट इट इज परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ एंड देयरफॉर आईटीसी वाज नॉट अलाउड। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुलजी जी का क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। रिसेंट सर्कुलर 212 ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द सप्लायर और एस सीए, hope the same would be on yearly certificate basis or monthly and it should be from July 17 from the current? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट नंबर 1, ये सर्टिफिकेट आपको तभी देना है जब डिपार्टमेंट आपको ऑब्जेक्ट करे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी कोई ऑडिट क्वेरी है ही नहीं 17-18 की, तो मुझे वो सर्टिफिकेट नहीं लेना है, 18-19 की कोई लेना नहीं है, मुझे पास्ट पीरियड का तभी लेना है जब वो मांगे। बट इन फ्यूचर I would always suggest to opt in on monthly basis, not go for yearly basis, क्योंकि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो then there's a huge possibility that you can get the certificate immediately. बट लेट से किसी कस्टमर के साथ आपका ट्रांजेक्शन बंद हो गया, तो बाद में शायद उस पीरियड का सीए सर्टिफिकेट ऑप्टेन करना विल बी द प्रॉब्लम। तो बेटर है इट इज गो ऑन मंथली बेसिस, बिकॉज मैं क्रेडिट नोट दे रहा हूं, तो शायद उस टाइम मुझे कस्टमर सपोर्ट कर देगा मेरे को। तो फॉर फ्यूचर आई वुड से ऑन मंथली बेसिस यू शुड ऑप्टेन, बट फॉर द पास्ट पीरियड ओनली if there is an objection, otherwise no. Bharat Saji, I have received the book on analysis of the GST return. Very good, useful during the filing. Thank you so much, sir. Thank you so much. This book is my first book with the department, so I hope it would be very, very helpful to all. So we are concluding the live discussion today, and another 3 minutes are there. Let me handle the query, whatever is being asked. We will have the 3 more minutes to close the discussion. Outward tax liability as per the outward tax liability is 1 lakh. As per EVB liability is 1 lakh. Same month credit note issued 50,000. So liability reduced due to the credit note. My GST liability is 50,000. Okay, no problem. समझ गया मैं आपकी बात। तो आपने अगर क्रेडिट नोट गुड्स का इश्यू किया है, इज इट फॉर गुड्स, तो आपने कोई ना कोई तो इनवर्ड ईवे बिल बनाया होगा। अगर लेट से क्रेडिट नोट फॉर एनी अदर रीजन है जिसमें मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, in that case you can provide the credit note, you can provide the details of the credit note कि भैया मैंने credit note issue किया, liability whatever I have reported in the GSTR1, that is exactly matching. The only reason because of the credit note, you provide the details of the credit note register, वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बोलिए आप ऑर्डर इश्यू कर दीजिए। Last question for the day. Rajan sir, can we adjust cess and additional cess levy on the cigarette of the purchase with the sell cess as same as GST input or to be deposited additionally at the time of sale? हाँ, अगर परचेज किया और सेल कर रहे हो तो आपने परचेज के ऊपर जितना सेस पे किया आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
बट एडिशनल सेस से तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन एडजस्ट। जो भी आपने परचेज पर पे किया है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेस किसी और लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, दैट वी नो, बट हाँ सेस सेस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। सेस का आईटीसी सेस की लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। Sir, after reading your book, we find every solution in that, and your importance is less as you have given mantras in the book itself, Guru Mantra. Thank you, sir. Thank you very much. So, thank you very much for joining the live discussion. I hope you find the same useful. And अगर आपको ये discussion अच्छा लगता है तो my request would be please click on the like button, also click on the subscribe button and share with the maximum people you can, so that we can learn the GST without investing any single pass of money. Thank you so much. Goodbye to all of you.